Assalamu alaikum everyone. Thank you very much for joining us for this new episode of Startup Talks this weekend. And I am joined today by somebody very special, Ms. Faiza Yousuf. Faiza has quite a few things going on behind her. She is a women empowerment advocate as well. She's founded quite a few things, and she keeps on starting new things. She's the founder, co-founder of CodeGirls, founder Women in Tech, consultant at Out of Box. She's been freelancing as well. She's recently been awarded the top freelancer on Upwork too. She's the senior product manager at Gentech Solutions. And apart from that, she's an ambassador for CryptoChicks, a blockchain and AI-based community in Toronto. And she's done projects for well-known organizations like USAID, UNEquals, Skillsoft, Thinkful, and Miller Center for Entrepreneurship, Social Entrepreneurship. Assalamu alaikum, Faiza. How are you? Walaikum Assalam. I'm good. Hmm. How are you? Great. I hope I've done justice to the introduction. I'm sure I've missed quite a few things there. No, I think that was a very long intro, I would say. No, it should have been more. You deserve more. I see you. I regularly hear quite a bit about you on social media. A lot of things come up, right? It's a good thing that you're doing. तो फायजा इतनी सारी चीज़ें शुरू करे चले जा रही हैं आप कब तक इतनी चीज़ें शुरू करती रहेंगी आप कभी रुकेंगी या नहीं रुकेंगी Um, नहीं, I don't think so. रुकना तो नहीं चाहिए और सिर्फ शुरू भी नहीं करनी होती, चलानी। हम्म, तो अभी तक जो मॉडल रहा है वो ये है कि आप कोई चीज़ शुरू करते हैं, यू टेक इट टू अ स्टेज एंड देन यू ट्रांसफर इट टू समवन हु कैन रन इट फुल टाइम। हम्म, सो सारी चीज़ों के साथ इसी तरह हुआ है, कोड गर्ल्स के साथ भी और women in tech PK के साथ भी, हम्म, कि eventually after the platform or project or program has reached a certain point, हम्म, तो next step मेरे लिए ये होता है कि I will hire a team and make sure कि वो चीज़ पे ठीक से चल रही हो। हम्म, तो अभी जो है वो I'm working with हम करियर एक्सेलरेशन प्रोग्राम चला रहे हैं खवातीन के लिए। हम्म, तो उसका फर्स्ट कोहॉर्ट है, तो उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा उसमें बिजी हूँ। हम्म, लेकिन जैसे ही वो एक जगह पे पहुंच जाएगा तो फिर उसके बाद I'll move out and make sure that the team is handling it properly. okay. So how do you distribute your time between freelancing and with all of these projects that you're doing किस तरह मैनेज करती हैं फैमिली भी है राइट हाउ डू यू मैनेज ऑल ऑफ दैट हम्म अच्छा, इसके अंदर प्लानिंग है ऑफ कोर्स, और आपकी टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स हैं, प्रायोरिटाइजेशन की स्किल्स हैं जो चाहिए होती हैं। बहुत साल लगे प्रोसेस ये बिल्ड करने में टू मेक श्योर कि आई एम एबल टू डिलीवर थिंग्स प्रॉपरली। उसमें भी बॉल्स ड्रॉप हो जाती हैं कभी कभार, कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड आ गई है ये, या अभी जैसे कोविड की वजह से आई गॉट कोविड 3 times, Oh सो my यू कैन goodness. इमेजिन। Oh my 3 दफा goodness. जो है वो आई गॉट सिक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो वो इस तरह की चीजें हो जाती है। लेकिन फॉर मी आई थिंक द सेविंग ग्रेस इज दैट मैं अपना पूरा दिन प्लान करती हूँ। तो मेरे पास जो है वो, जैसे आज सैटरडे है, सो देयर आर अ फ्यू पर्सनल थिंग्स, few things to do. So one of the things that I wanted to do was to talk to you, and then I have a few more things that I need to complete today. So every day I have 2 or 3 objectives, big things that I need to do, and then उसके बाद बाकी सारी चीजें चलती रहती हैं। और कोई भी ये काम अकेले नहीं कर रहा होता। तो कोड गर्ल्स के अंदर मेरा रोल इज मोस्टली strategizing, talking to people, sometimes teaching, but mostly there is a team behind it. Women in tech में भी यही है कि my role is just like 20-30 minutes a day and not more than that, because you already have people taking care of the things. So वो सुनने में शायद ये लगता है कि मैं पूरा दिन women in tech पे या पूरा दिन code girls पे गुजारती हूँ, but ऐसा नहीं है। तो वो आई थिंक डेलीगेशन की एबिलिटी और टाइम मैनेजमेंट की एबिलिटी, आई थिंक उससे जो है वो यू आर एबल टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स।
Acha, before we move on to project management and product development, you are obviously, it's very much evident that you are a strong advocate of women empowerment, right? Which is a good thing. I'm a father to a daughter, young daughter, so this is something I give a lot of importance to, right? Um, how do you think you've been at it for over 10 years now, right? It's been over a decade. You've seen things up close and personal, and you've been building things as well, right? Especially centered around empowering women and technology. So, can you elaborate on that? Where was the ecosystem with regarding women in technology or in general, right? And where it is standing today, right? Then after that, I'd like you to touch on what Code Girls and Women in Tech is actually doing. Right. Um, Taimur sir, I started working 2009 में दिसंबर में. I got my Mhm, job and I think उस वक्त और उसके कुछ अरसे बाद तक usually I worked in small size organizations, mostly startups. I used to mhm, be the only woman in the team. mhm, 50 लोगों की भी अगर टीम है तो उसमें भी मैं अकेले I would be the floor and बहुत हो गया कहीं पे तो HR में शायद आपको खातून मिल जाएंगी. तो right. सो ये था इकोसिस्टम का हाल आज से 10 11 12 साल पहले. लेकिन अब जो Mhm, है वो आप जहां भी जाएंगे आपको नजर आएगा कि देयर आर अ लॉट ऑफ वुमेन mhm, वर्किंग इन द टेक सेक्टर. और हमारा जो जनरली जो अब डाइवर्सिटी का रेशियो है वो लेस देन 10% था 10 years mhm, ago और अब वो mhm, नियर 20% है. तो mhm, दैट्स अ बिग लाइक चेंज. और उसमें बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे प्लेयर्स हैं. हम इससे पहले जहारा के बारे में बात कर रहे थे. शी इज वन ऑफ द फ्यू पीपल हु हैव लाइक रियली sure that women get an opportunity. Shamim Rajani, I work with her and make sure कि भाई उनकी अपनी कंपनी का 30% diversity ratio है 30 से भी ऊपर. So mhm, that tells you that these are the people who are actually doing things that are really making a difference. इसी तरह बहुत सारे लोगों के नाम हैं जिन्होंने बहुत सारा काम किया इस एरिया के अंदर टू मेक श्योर कि खवातीन को अपॉर्चुनिटी मिले. और दूसरा इस मामले में कि जो वर्क प्लेस है वो खवातीन के लिए सेफ भी हो जाए. सो you must have heard about Nigadda. She has done a lot of work in cyber security, a lot of mhm, work in workplace safety. हम उसकी बहुत सारी वर्कशॉप्स भी करा रहे होते हैं कोड गर्ल्स में. तो हमारे पास सना है, शी टॉक्स अबाउट वर्कप्लेस सेफ्टी टू मेक श्योर के एक सेफ एनवायरनमेंट खवातीन को मिल रहा हो. एंड देन पॉलिसी चेंजेस ओवर द पास्ट 10 years. mhm, बहुत सारे पॉलिसी चेंजेस हुए हैं. तो बहुत सारी जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज अब आपको ऑर्गेनाइजेशन में नजर आती हैं mhm, और फ्लेक्सिबिलिटी नजर आती है. तो उसकी वजह से आपको ये नजर आ रहा है कि और ज्यादा खवातीन जो हैं वो इसके अंदर आ रही हैं. सो इकोसिस्टम हैज कम अ लॉन्ग वे, not only in terms of diversity and inclusion but also in terms of the size of the company. Companies क्लाइंट्स का टिकट साइज है वो, और एज वेल एज आप स्टार्टअप इकोसिस्टम में तो देख ही रहे हैं कि कितनी ज्यादा फंडिंग भी आ रही है. पीपल आर लुकिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन एंड सॉल्यूशंस कमिंग आउट ऑफ द कंट्री. mhm, तो ये है. और जहां तक बात है कोड गर्ल्स और वुमेन टेक की, तो वुमेन इन टेक तो इसलिए स्टार्ट हुआ था कि मैं फास्ट में पढ़ा रही थी कराची में एमएस और बीएस को कुछ कोर्सेज, और वहां पर बहुत थोड़ी सी लड़कियां हैं यूनिवर्सिटी में. mhm, मेरा अपना बैकग्राउंड पब्लिक यूनिवर्सिटी का है, मैंने एलडी से पढ़ा है. तो 100 स्टूडेंट्स थे मेरी क्लास में, लड़कियां 50 लड़के. mhm, सो आई केम फ्रॉम अ वेरी काइंड ऑफ जेंडर बैलेंस्ड इन्वायरमेंट. mhm, तो जब मैं फास्ट गई तो वहां पे 70 80 लड़के और 3 या 4 लड़कियां क्लास में थी. एंड दे नेवर सेट अ क्लासरूम, लाइक नेवर. एंड दे वर जस्ट बिल्कुल कोने पे बैठी होती थी और वो कुछ भी नहीं बोलती थी. mhm, So when I started interacting with them, one of them said to me that we only know two women who are working in tech. One is Shara, another one is you. And we only know you because you are our teacher. okay. And that kind of statement changed a lot of, started, putting a lot of gears. Okay, ये तो बहुत ही अजीब बात है because हजारों लोगों को तो मैं जानती हूँ खवातीन जो टेक में काम करती हैं. तो ऐसा ये कैसा मसला
एंड देन आई रियलाइज कि कोई विजिबिलिटी नहीं. Hmm. The issue is with visibility. कि people Right. think कि there are no women in tech. So I started the Facebook group और मैंने सोचा कि मैं उसको women only रखूंगी और अपनी students को मैं उस पे ऐड करूंगी and then I'll add my fellow women in tech and we'll start a dialogue there. So वो it's been 5 years and it has exploded so much. We have nearly 10,000 women in tech in that community. Most of them are in Pakistan and working in the tech industry. Okay. और फिर उस कम्युनिटी से बहुत सारे आइडियाज जनरेट हुए और फिर हमने बहुत सारे आइडियाज फॉलो थ्रू किए. उनमें से एक कोड गर्ल्स है. इसके अलावा और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हम करते रहते हैं टू मेक श्योर कि वो विजिबिलिटी जो है वो रहे. सो हम खवातीन का डिजिटल फुटप्रिंट बना रहे होते हैं, सेंडिंग देम टू कॉन्फ्रेंसेस टू अटेंड एंड स्पीक. मैं जो है वो तकरीबन हफ्ते की कोई 50-60 रिकमेंडेशंस और introductions लिख रही होती हूँ just to make sure that they are connected to the right kind of opportunities, not just locally but internationally also. So उसमें से बहुत सारी चीजें women in tech से निकली. कोड गर्ल्स जो है वो एक कोडिंग बूट कैंप है लड़कियों के लिए. उसकी टारगेट ऑडियंस है मिडिल टू लोअर मिडिल क्लास, सो हाउस होल्ड्स विद इनकम 50,000 और लेस. एंड वो लड़कियां जिन्हें मैट्रिक इंटर BA BCom किया हुआ है और उनके पास एक्सेस नहीं है और पैसे नहीं हैं टू गेट इनटू टेक्नोलॉजी एजुकेशन. Right. सो व्हाट वी डू इज कि हम उनको प्रोग्राम में लेकर आते हैं, 2 बेसिक टेस्ट उनके लेते हैं just to see कि they are smart enough to learn coding and then we took them to the program. 6 months वो coding basic coding सीखती हैं और उसके बाद हम उनको jobs में place करते हैं. तो अभी तक जो है वो 800 लड़कियां हमने ग्रेजुएट की हैं और छोटा छोटा बैच साइज होता है लाइक 10-12 गर्ल्स, नॉट मोर देन दैट. Right. सो हमने 800 लड़कियां जो हैं वो ग्रेजुएट की हैं और नियरली 200 को हमने आईटी इंडस्ट्री में प्लेस किया है लोकली और इंटरनेशनली. और मोस्ट ऑफ देम डू नॉट हैव technology background, they are not engineers. They learn coding from our program. देन वहां से अच्छा उस प्रोग्राम में भी बहुत सारे फेजेस हैं. तो फेज 1 में वो बेसिक सीखती हैं, फेज 2 में एडवांस, इस तरह से. तो 4 साल से ये कर रहे हैं एंड वी आर उसमें जाहिर प्रॉब्लम्स भी हैं बट आई थिंक उससे और हमें विजिबिलिटी नजर आ रही है कि बिकॉज जैसे कोड गर्ल्स है या टेक करो है, इस तरह के प्रोग्राम्स जब आने लगे हैं तो फिर वो वाली कम्युनिटीज या वो वाला सेगमेंट जो अंडर सर्व्ड है और अंडर रिप्रेजेंटेटेड है उनको भी जो है मौका मिल रहा है कि दे कैन कम एंड लर्न समथिंग. और टेक का पे स्केल इतना डिफरेंट है दूसरी कंपनी से. मतलब अगर आप एक लड़की को सिलाई मशीन देंगे तो वो महीने का कितना कमा, जी. लेकिन हमारे पास जो लड़की हैं उनकी हाउस होल्ड इनकम 50,000 से कम है. जब उनकी पहली जॉब लगती है तो वो 30,000 की लगती है. जी. तो सडनली जो है 30-40-50,000 की जॉब, कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ है कि जब हमने इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ प्लेस कराया है तो उनकी पहली जॉब थी $800 की एंड दैट्स लाइक ओवर 100K इन PKR. सो वो पूरे घर का डायनामिक एक तरह से चेंज हो गया, राइट? और वो जो है वो लोअर मिडिल क्लास से एक स्टेप ऊपर चले गए. So this is what what the main purpose of the program is. Is that do they have to pay for it, or is it free for them, the training that is being imparted to them? हमारा मॉडल ये है कि हम उनसे प्रोग्राम के शुरू में 1,500 रुपए लेते हैं और जब वो प्रोग्राम खत्म कर लेती हैं तो हम उनको 1,000 रुपए वापस कर देते हैं. तो पूरे 6 महीने की फीस है 500 रुपए. जो प्रोग्राम है उसकी बहुत सारे फंडर्स हैं, लोकल भी इंटरनेशनल भी. सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से बहुत सारे लोग उस प्रोग्राम में इनपुट करते हैं. एक लड़की की ट्रेनिंग कॉस्ट जो है वो है 30,000 रुपए फॉर 6 मंथ्स. तो वो 30,000 रुपए हमें जो है वो डोनर से फंडर से आ रहे होते हैं एंड देन वी टेक दैट 500 रुपीज जस्ट टू मेक श्योर के वो इनरोल करा के भाग ना जाए बेसिकली. Right. मतलब just for the sake of it, right? It's actually very good, very interesting as well to learn about it. If there is anything, any input, if my words can make a difference, I'd love to contribute, right? You can reach out to me. किसी को mentoring की ज़रूरत है, किसी को guidance की ज़रूरत है, I'd be happy to do it. Acha, Faiza, you mentioned NED. You went to NED quite a few years back, right? NED से बहुत सारे ज़बरदस्त लोग निकले, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं.
काफ़ी सारे तो यूरोप और यूएस मूव कर गए. आई डोंट नो इफ यू नो हिम और नॉट. प्रोफेसर अंसार अहमद खान, ही एक्चुअली स्टार्टेड the computer science program at NED. He's related to me. He's my father's elder brother. Right. तो काफ़ी ज़बरदस्त काम हो रहा है वहाँ पर. अच्छा, moving on to your forte of what you are doing right now, product management, right? Why is it so important? What do you feel? प्रोडक्ट मैनेजमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज आप स्पेशली वो कंपनीज या वो स्टार्टअप्स जो कि प्रोडक्ट्स बना रहे हैं आइदर B2B या B2C, Mm-hmm. the project management doesn't cut it. Project management is like an administration job, Mm-hmm. that you are making sure that people are delivering things on time, things are of quality. Mm-hmm. तो वो QC patient type job है. Product management is basically kind of like a thinking job, a Yeah. strategy job. Yeah. सो मेरा जो मतलब इंट्रो हुआ प्रोडक्ट मैनेजमेंट में वो भी इट वाज बिकॉज आई वांटेड टू बिल्ड अ प्रोफाइल ऑन अपवर्क, और मेरा उस वक्त सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का और क्वालिटी का, डेवलपमेंट का, डिप्लॉयमेंट्स का इसका एक्सपीरियंस था. Mm-hmm. और जब मैं वहां पे गई तो मुझे जो काम मिलना शुरू हुआ दैट वाज काइंड ऑफ लाइक अ इंट्रो टू प्रोडक्ट मैनेजमेंट टाइप का काम, दैट अ फाउंडर वुड कम एंड से कि अच्छा दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, do you think technology can solve it, how would the product look like, work on a bit of user personas and user research. Mm-hmm. और वो काम करते करते I realized that this is like a whole new universe and this is how products should be made. Mm-hmm. It's not just कि आपने दो डेवलपर्स अपने ऑफिस में बिठाए हैं और एक उनके सर पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बिठा दिया है और आपकी प्रोडक्ट नहीं, because there are a lot of work on, in terms of understanding users, in terms of measuring things, Mm-hmm. in terms of strategizing things. और वो इस किस्म का एरिया है जो कि टेक्नोलॉजी, डिजाइन, मार्केटिंग, बिजनेस हर चीज से in touch है. So what I did is that when I started working, then I realized that there are a lot of things that I don't know. So Mm-hmm. I started learning. I started doing a lot of courses and master classes, and I found myself a mentor to make sure कि अच्छा अगर मैं काम कर ही रही हूँ तो फिर I know it properly and I can do a better job at it. So it's been 5 years so far in that area. और बहुत सारी मैंने प्रोडक्ट्स किया, लॉजिस्टिक्स से लेके ई कॉमर्स, एडटेक. देन उसके अलावा फिर ये हुआ कि once I became a subject matter expert, so people started reaching out to me कि कोर्स बना दें प्रोडक्ट, कोई छोटी सी ई बुक हमें बना दें प्रोडक्ट मैनेजमेंट पे ताकि हम इन हाउस प्रोडक्ट मैनेजर्स को दिखा सकें या प्रोजेक्ट मैनेजर्स को ट्रेन कर सकें फॉर प्रोडक्ट. तो इस तरह की वो जो है वो जर्नी थी. और अब आप देखेंगे कि पाकिस्तान में क्योंकि स्टार्टअप इकोसिस्टम बूम कर रहा है तो अब आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट की बहुत सारी जॉब्स साथ नजर आने लगी हैं. बट वी डोंट हैव इनफ प्रोडक्ट मैनेजर्स राइट नाउ इन द कंट्री. तो वो तो डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, बिकॉज इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड फ्रॉम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. इट्स नॉट अबाउट taking care of Jira tickets or taking care of Trello board. Yeah. अच्छा, तो it's sometimes it's difficult for people to differentiate between product development and product management, right? What would you have to say about that so that people know what's the fine line between the two? प्रोडक्ट डेवलपमेंट तो आपका पूरा एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक बहुत बड़ी टीम इन्वॉल्व है. सो आपके पास इन्वेस्टर्स हैं, आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजर्स उसके अंदर होंगे, डेवलपर्स, डिजाइनर्स, टेस्टर्स, डेवऑप्स के लोग हैं, और भी बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन के लोग हैं. सो देयर आर सेल्स के लोग हैं, ठीक है. सो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल दैट आर इन्वॉल्व्ड इन दैट प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट. Product management जो है ना, it's a role, and that role is about the person who's steering the product in a certain direction. और वो डायरेक्शन कहाँ से आ रही है? वो डायरेक्शन आ रही है उस डेटा से जो उसने कलेक्ट किया है, उस एक्सपोजर से जो उसके पास है, उस लर्निंग से जो गैदर कर रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. सो मेरा जो है वो बहुत सारा टाइम उसमें गुजरता है कि आई एम टॉकिंग टू द पीपल हु आर यूजिंग द प्रोडक्ट.
कोई बीटा, आपके कुछ केसेस में बीटा टेस्टर्स हैं, कुछ केसेस में अर्ली यूजर्स हैं, अर्ली अडॉप्टर्स हैं, एंड आई एम टॉकिंग टू देम, लर्निंग अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस और किस कॉन्टेक्स्ट में जाके वो प्रोडक्ट जो है वो फिट होती है। और उसके अंदर बहुत ज्यादा यूजर रिसर्च का काम होता है। आप डायरी स्टडीज कर रहे हैं, आप यूजर टेस्ट सेशन करा रहे हैं, आप and thinking, and then getting to a point where you have a certain direction product, या ये वाला जो ये वाला काम है, I think we should explore more and leave that area behind. So it's not about के फीचर बिल्ड करते जा रही हूँ। मैं प्रोडक्ट मैनेजर हूँ, तो मैं रोज सुबह उठती हूँ और 4 नए सोचती हूँ और फिर बोलती हूँ कि ये बना दो। It doesn't work that, because if I'm saying that ये फीचर बनेगा, so I need to have a justification, and for that justification I सो वो जो डेटा कलेक्शन की पूरी जिम्मेदारी है, उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन फॉल करता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट, क्वांटिटेटिव हो या क्वालिटेटिव डेटा हो। सो इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द होल endeavor of product management, it's product development itself, and it's very different from project management as well. Okay. Acha, interestingly, you mentioned earlier that you are you've been connected with the edtech space as well. So through this chat of ours, though it's been recorded, right? I request you. So a lot of people reach out to me as well, right, for help and support. There's somebody who's got a wonderful startup in the edtech space, right? I hope you wouldn't mind if I connect you over to the founder. शायद उसका कोई मसला है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के हवाले से, शायद आपके थ्रू हल हो जाए, अगर आपको मतलब नेक्सस अगर मीट होता है और प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। Yeah, absolutely, no problem. चले, दैट्स ग्रेट। अच्छा फायजा, तो व्हाट इतने धक्के खाने के बाद व्हाट डू यू सी द फ्यूचर टू बी? बहुत सारी ख़वातीन तो आ रही हैं सामने, पाकिस्तान के स्टार्टअप इकोसिस्टम का क्या फ्यूचर है, टेक इनोवेशन का क्या फ्यूचर है? बिकॉज a lot of people argue that whatever is happening in Pakistan is actually a replication of of tried and tested models in other regional countries. But for me, I personally, I don't take it that way. I'm a strong critic of that argument, because as long as my children can take classes online, right, while through YouTube or any other online channel or Khan Academy or something, my 12, 13-year-old son, he's way ahead in his studies than I was at his age, right? And he's a homeschooled actually, right? So with things like that, we can order groceries online. That is all innovation, right? But you being a product expert, right, a management expert, right, more about strategy. I'm also a person of strategy. What do you feel the future is like? Are we really innovating? Abhi to I don't think so. I don't think this is innovation. I think we are just trying to solve some basic problems that we have here of access and of जो हमारी एक बहुत ही अजीब तरह से सप्लाई चेन चलती है हमारे मुल्क की, हम उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहे हैं। ट्रू इनोवेशन वो है जब आपकी जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बेसिकली डिजिटाइज हो जाएं, और आपके जो प्रोसेसेस हैं जिसके अंदर 4-6 महीने लग रहे हैं, वो प्रोसेसेस आपके कट शॉर्ट हो जाएं और चीजें ऑप्टिमाइज हो जाएं। अभी जो हमारे पास जितने भी स्टार्टअप्स हैं, मोस्ट स्टार्टअप्स, नॉट ऑल, मोस्ट स्टार्टअप्स, दे आर वर्किंग इन स्पेसेस जो कि ऑलरेडी उनके सॉल्यूशंस दुनिया भर में अवेलेबल हैं और वो उसके लिए लोकलाइज कर रहे हैं, चाहे वो ग्रोसरी डिलीवरी हो, फूड डिलीवरी हो, मेडिसिन डिलीवरी हो। These are not innovative solutions in the sense, if you ask me, in terms of technology or in terms of business itself, because किसी ने फोन पे ग्रोसरी ऑर्डर की और आपने डिलीवर कर दी, this is not innovation. Innovation is something when you are solving an actual real problem by optimizing something or removing some kind of blocker. तो उसमें जो है वो अभी टाइम है. So I still say that जो स्टार्टअप्स हमारे पास
या तो सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन में काम करते हैं, या वो बेसिकली एडटेक में काम कर रहे हैं, कुछ सर्टन एरियाज एडटेक के. These are the solutions that I would truly call innovative solutions. Other than that, a lot of it is just taking some product, some benchmark from outside the country, then localizing it for the local. तो आप चाहे उसके लिए राइड हेलिंग सर्विसेज को ले लें, या आप मास ट्रांजिट की वाली चीजों को ले लें. और आप ये भी देखेंगे कि जब वो बाहर से एक पर आता है तो वो उसका एक बहुत बड़ा एक वॉबलिंग इफेक्ट होता है, बिकॉज हमारी इकोनॉमी, हमारे लोग, हमारा कल्चर बहुत अलग है. सो आप यूएस से कोई ऐप उठा का रेप्लिका बना लें फॉर पाकिस्तान, so in most cases it's not going to work out. You need to have a lot of localized context in to be put in place to make sure कि वो चीज यहाँ पे काम कर रही हो. मेरा अपना ये ख्याल है कि हमारी वो ट्रू डिजिटाइजेशन या इनोवेटिव, वो जो एक इनोवेशन वाली चीज है, वो उस वक्त आएगी व्हेन वी लुक फॉर कंट्रीज दैट आर एक्चुअली डिजिटाइजिंग a lot of their कंट्री वाइड ऑपरेशंस. एस्टोनिया उसकी एक मिसाल है. आपका हेल्थ टेक का सेक्टर, आपका हेल्थ का सेक्टर, आपका एजुकेशन का सेक्टर, आपका गवर्नेंस का सेक्टर, ये सारी चीजें तक ऑप्टिमाइज नहीं होती जब तक डिजिटाइज नहीं होती. आई डोंट थिंक कि ग्रोसरी डिलीवर करने से या राइड हेल करने से आप ट्रूली इनोवेटिव कंट्री या ट्रूली इनोवेटिव टेक इकोसिस्टम बना सकते हैं. दिस इज माय ओपिनियन. अगेन, अ लॉट ऑफ पीपल विल आर्ग्यू अदरवाइज. द रीजन बीइंग कि जो आप जब आप एक ग्रोसरी ऐप बना रहे हैं, मैं एज अ प्रोडक्ट मैनेजर बात कर रही हूँ कि अगर आप अमेरिका में कोई ग्रोसरी डिलीवरी की ऐप है और हमारे यहाँ कोई है, वहां कोई राइड हेलिंग की सर्विस है, हमारे यहाँ कोई है, कॉन्टेक्स्ट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होगा, आपको लोकलाइज करना पड़ेगा, बट अ लॉट ऑफ इट वुड स्टे. But when it comes to e-governance, when it comes to education, when it comes to healthcare, these are the places where you will see the actual effect of localization. कि जब आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, आपकी गवर्नमेंट स्कूल, आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, जब आप उनको लेकर आएंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, देन यू विल सी कि ब्यूरोक्रेसी का और प्रोसेस मसलों का क्या हाल हो, और उनको सॉल्व करना be like a very big challenge. And I think Pakistan should move in that direction. I personally think कि हमारा पहला स्टेप जो है ना, वो हमारा जो हेल्थ केयर का एक बहुत ही नॉन एग्जिस्टेंट किस्म का जो सिस्टम है, उसको फिक्स करना है. और दूसरा शायद ई गवर्नेंस इज समथिंग दैट वी शुड लुक फॉरवर्ड टू. एडटेक के अंदर वैसे भी बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स आपको नजर आते हैं, बहुत सारी. आई नो अबाउट टी स्क्वायर, आई नो अबाउट अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस एंड स्मॉल स्टार्टअप्स मेकिंग श्योर के अंडर सर्व कम्युनिटी में लोगों के पास टेक्नोलॉजी पहुंच जाए और एजुकेशन पहुंच जाए. लेकिन ई गवर्नेंस और हेल्थ केयर ऐसा है जिसमें कोई प्राइवेट प्लेयर इसका इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता. तो उसके लिए जो है ना, फॉर बीइंग अ ट्रूली काइंड ऑफ टेक ओरिएंटेड और इनोवेटिव कंट्री, these are the problems that I think we should look forward to. So, building on that argument, health tech is it's not seeing a revolution actually. It's more of kind of like providing digital access to health services digitally, what's going on in Pakistan. But when you talk of tech infusion, there's another health tech startup started in Bangladesh called Maya. They've also entered Pakistan in collaboration with Jazz, though on a very small scale, but they do plan on going mainstream too. What do you have to say about the health tech space in Pakistan then, specifically health tech? पाकिस्तान में जो द फ्यू हेल्थ टेक related services or apps that are working in tech space that I know about, one is Sehat Kahani. I'm sure everybody knows it. They're doing a wonderful job with that. उसके अंदर भी of course compliance के भी मसले होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो I had a conversation with them and they were telling me about compliance issues, because a lot of times the doctors cannot prescribe medicines online. They have to check the patient in person, and उसके अंदर HIPAA compliance है डेटा के लिए, और बहुत सारी चीजें हैं. इसके अलावा I think I've seen some Ola Doc and Marham और इस तरह की जो अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं, डॉक्टर की रेटिंग देख सकते हैं, ये वाली थोड़ी वो ट्रांसपेरेंसी बिल्ड करते हैं.
लेकिन इसके अंदर अभी जो 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 मेरी जो डायरेक्शन है ना, वो है हमारा जो पब्लिक हेल्थ केयर का सिस्टम है. That is something I think, matlab, that's a huge thing. Matlab, it's not going to solve in like 5, I don't think even in 10 years. Yeah. Lekin it's a problem worth taking on. It's a problem that you need to solve for communities जहाँ पे 20-20, 25-25 किलोमीटर तक कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, कोई गायनेकोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है. ऐसा तो नहीं है लोग वहां बच्चे पैदा नहीं करते, और ऐसा भी नहीं है कि लोग वहां बीमार नहीं होते. तो वो वाली जो प्रॉब्लम्स है ना, ये वाली जो एक्सेस टू हेल्थ केयर, नॉट जस्ट डिजिटली, बट टू मेक श्योर दैट यू हैव एन आई, have collected all the data about the people living all over the country, that what kind of they have when it comes to healthcare. This is something that we don't have. पाकिस्तान का एक जो, स्पेशली जब मैंने लोकल कंपनीज के साथ काम किया ना, मैं थोड़ा सा एक तो पीछे इस वजह से भी हटती हूँ, बिकॉज आई डोंट फाइंड दैट काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा कलेक्शन का, रिसर्च का इतना रिवाज भी नहीं है हमारे यहाँ. Right. तो आपको वो चीजें नहीं मिलती. तो अगर मैं यूएस में किसी के साथ या यूरोप में किसी के साथ काम कर रही हूँ, सो मे बी आई हैव टू पे अ फ्यू हंड्रेड और फ्यू थाउजेंड यूरोज टू गेट अ रिसर्च पेपर और अ रिपोर्ट, बट देयर मस्ट बी समथिंग इन दैट एरिया दैट आई कैन बिल्ड अपॉन, वेयर आई कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. हमारे यहाँ क्या होगा कि अगर मुझे कहीं प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो एक तो ये कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, एंड देन उसके बाद यू आर जस्ट एनेक्डोटल डेटा आपके पास है कि उसने वो कहा, उसने वो कहा. यू डोंट हैव द एक्चुअल कॉन्क्रीट डेटा टू बिल्ड अपॉन कि अच्छा अब इस मसले का क्या करें. और मैंने जो है वो जीबी में आई हैव ट्रैवल्ड अ बिट एंड अ फ्यू अदर, कि वहाँ पे हेल्थ केयर का बहुत बुरा सिस्टम है, मेडिसिन की शॉर्टेज है, डॉक्टर्स नहीं है. ये प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी से एक लिमिट तक सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा ये सॉल्व होंगे बाय एम्प्लॉइंग ह्यूमन सॉल्यूशंस. और प्रोडक्ट मैनेजमेंट वाला जो काम है हमारा, उसका बहुत बड़ा हिस्सा ये भी है कि वी डोंट हैव टू, मतलब इफ योर ओनली टूल इज हैमर, एवरी प्रॉब्लम लुक्स लाइक अ नेल टू यू. सो इफ यू आर अ टेक्नोलॉजिस्ट, देन यू से कि ऐप बना दो. दैट्स नॉट अ सॉल्यूशन. सो आपने उसकी स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना है, राइट, कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा. एंड आई थिंक ये चीज आपको सिर्फ हेल्थ टेक में नहीं मिलेगी, पब्लिक स्कूलिंग के सिस्टम में भी मिलेगी और जनरल स्कूलिंग सिस्टम में भी मिलेगी. मुझे आई वाज अ फ्यू इयर्स अगो, आई वाज ट्राइंग टू लुक कि इज देयर अ रेगुलेशन अथॉरिटी दैट रेगुलेट्स, जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको कोई रेगुलेट करता है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स को किस किस्म की फैसिलिटीज हैं, या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कोई चेक करता है. एंड इट टुक मी अ फ्यू मंथ्स बट नथिंग केम आउट ऑफ इट. सो आई काइंड a back step के I don't think this is some area, मतलब I cannot just get into research for this right now, लेकिन कोई चीज अवेलेबल नहीं है. तो आई थिंक ये वाले सॉल्यूशंस हैं ऑडिटिंग के, डेटा कलेक्शन के. यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे एंड देन फ्रॉम देयर यू विल ट्राई टू फाइंड समथिंग दैट, चाहे वो टेलीमेडिसिन हो, या वो मोबाइल क्लिनिक्स हो, या कोई भी चीज हो. Chale, we are almost coming to an end of time, but I have to squeeze in two questions. One is related to education, right? Especially, this is not only in Pakistan, but it's a global phenomena. But you and I are residing in Pakistan, and we've got families and children and everything. Education is something that that was severely affected for young children, right? It's much easier for people either in late teens or over teens to cope up with the sorry, online education and everything, but for young kids it's been very difficult. Secondly, since you are yourself an advocate for women empowerment, right? The education sector in Pakistan is highly dependent on women. More and I think over 80% of them are probably teachers, as far as schooling for young kids is concerned. Maybe in university level, the situation, the statistics might change a bit, right? But for schooling, it's women who are actually playing a lead role there. उनकी jobs भी काफ़ी affect हुई. So uh, when we talk of technology and how women can benefit, and with एक बहुत सारी चीज़ों का एक नेक्सस यहाँ पर बन जाता है, बच्चों की एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट और टेक्नोलॉजी और इन सब चीज़ों का. तो व्हाट डू यू थिंक इज
there won't be any ideal solution, right? Of course, but what's a good option here in your opinion? अच्छा, एक तो इसके अंदर ये है कि व्हेन एजुकेशन का जो एक इशू, मेरा मेरा जो क्लोजली एक्सपीरियंस रहा, आई डोंट हैव किड्स, सो आई एम नॉट फेमिलियर विद द होल होम schooling and that idea, but जो information I gathered from code girls, because हमारे पास 40% जो खवातीन वहाँ आती हैं वो मदर Mhm. और उनके अपने बच्चे हैं, और हमने वो एक बहुत बड़ा जो इशू, जो हम एनेक्डोटल डेटा कलेक्ट कर रहे थे, वो ये था कि टीचर्स इक्विप नहीं थे हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी एज एन एजुकेशन टूल, स्कूल्स इक्विप नहीं थे, Mhm. मोस्ट ऑफ देम हैड नो इंफ्रास्ट्रक्चर टू गिव टू द टीचर्स। देन जो घर में पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं, चाहे वो मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास हो, दे डोंट हैव, अगर उनके पास 3 बच्चे हैं तो दे डोंट हैव लैपटॉप्स Yeah. कि वो 3 बच्चे एक साथ क्लास ले सकें। तो ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है। देन हमारे सिटी वाइज, कंट्री वाइज के इश्यूज हैं, इंटरनेट का, बिजली का, यू नेम इट। Mhm. सो वो एक प्रॉब्लम जो है वो नजर आया हमें। इसके अंदर आई थिंक हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस हैं, जैसे मैंने भी जिक्र किया आपसे टी स्क्वायर का। इट्स एन ऐप दैट वर्क्स विद अ लॉट ऑफ रूरल कम्युनिटीज टू टीच बेसिक लिटरेसी टू स्टूडेंट्स। अगेन उसकी टारगेट ऑडियंस अलग है, वो एरिया में काम कर रहा है, लेकिन इस तरह के सोल्यूशन जरूर हो सकते हैं जिसमें स्कूल्स अपना कुछ पोर्शन डिजिटाइज कर दें, ठीक है। एंड देन दे शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर, मतलब दे आर नाउ नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज काइंड्स ऑफ सिचुएशंस, बिकॉज फ्रॉम what we are listening from researchers all around the globe, COVID is not going anywhere, at least for the next 1 or 2 years. Yeah. So even though हम vaccinated हैं और booster shots लगवा रहे हैं, name it, but still it's there and it's a reality, and it's not going to be the only thing that happens. So एक तो ये है कि जो existing solutions हैं उनको हमें expand करना है। I worked with a tech solution in Australia, जहाँ पे उन्होंने प्री स्कूलर्स के लिए जो है वो एक सोल्यूशन बनाया था, जिसमें प्री स्कूलर्स एंड ऑल्सो उसके अंदर उसका फिजिकल कंपोनेंट था, यानी चाइल्ड केयर डे केयर सेंटर था, बट उसके अलावा बहुत सारा कंटेंट वो पब्लिश करे थे और स्टूडेंट्स टू बी एबल टू डू इट ऑन देयर ओन विदाउट नीडिंग देयर पेरेंट्स टू हैव लाइक देम। जैसे हमारे यहाँ, मैं अपनी कजिन्स वगैरह को देख रही थी या और अपनी दोस्तों को देख रही थी कि जब बच्चे पढ़ रहे हैं, अम्मा बराबर में बैठी हुई है जूम की क्लास के ऊपर, एंड शी हैज टू स्टे देयर, child is attentive in the classroom. Yeah. So they kind of solve that problem by creating content or creating a solution in a way that the child can navigate itself. और वो बच्चा जो है वो खुद ऐप नेविगेट कर रहा है और वो खुद जो है वो लर्न रहा है। बहुत सारी उसकी गेमिफिकेशन है, बहुत सारी चीजें हैं, तो बच्चा खुद लर्न। तो इस तरह के बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। अगेन ह्यूज प्रॉब्लम, ह्यूज स्कोप फॉर सॉल्विंग थिंग्स, ह्यूज स्कोप फॉर स्ट्रेटेजाइजिंग, बट उसके ऊपर काम काम करना पड़ेगा। एंड आई डोंट थिंक every school also have the funding and the ability to adopt these solutions. और हम तो अभी शहरों की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रूरल एरियाज की वहां पे क्या हो रहा है। सो आई थिंक maybe some kind of think tank, some kind of working group with educators, with entrepreneurs, with people expertise in with people who have expertise in ed tech, they all get together and think about. अभी मैं फोकस ग्रुप में थी with UNDP, so they were talking about women in technology के जो issues हैं। तो दैट वाज अ गुड लर्निंग इन द सेंस कि उसमें जहां थी, मैं थी, सदफ थी, बहुत खवातीन जो इस एरिया में काम करती हैं। सो यू हेयर फ्रॉम देम एंड देयर प्रॉब्लम्स, एंड देन उसमें यू सी के पेयर्स कमिंग आउट ट्राइंग टू वर्क टुगेदर ऑन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। सो आई थिंक उसकी जरूरत है कि people can come together and maybe have a dialogue about it. चले चले Faiza, in the end, there's something that you have been working closely on, right? About women and technology. There are lots of aspirants. Traditionally, women in Pakistan who went on to get higher studies became doctors and then started families and forgot all about their degrees.
right? Yeah, but times are changing globally and within the country as well. Norms are absolutely different now, and they continue to evolve. So, what message would you have for young aspiring women? Right, you are yourself mentoring as well. What message would you have for them? Just to tell them that tech is not only about coding and startups or Yeah, things that you hear all around. yeah. This is a huge area, a very big ecosystem worldwide. Um, when you are living in Pakistan, you can have a million opportunities to work with people all around. Mm-hmm, So I worked on all 5 continents. So you can do that. So whatever is your area, आपको मौका मिल जाएगा उस एरिया में काम करने के लिए. So you should definitely pursue tech. Coding is not something जो सिर्फ engineers को आनी चाहिए. It's not just a skill, it's also a way of making. तो आई थिंक वो आपकी थिंकिंग की बड़ी लॉजिकल थिंकिंग की बड़ी जबरदस्त ट्रेनिंग कराती है ये एक्सरसाइज ऑफ code. mm-hmm. And I think schools should, start thinking about it and encouraging students to learn it. और जो भी aspiring लोग हैं जो टेक में आना चाहते हैं, be it girls and boys and especially girls, I think definitely give it a shot. Definitely give it a shot. Chale. Thank you very much for your thoughts and your opinion. Faiza, it was lovely speaking to you. I wish you all the best with the fantastic work that you're doing with women empowerment and getting them onto the tech ladder. Um, I would love to meet you in person as well if there's any way I can contribute to the little ecosystem that you're trying to build. Please do reach out. I'd be happy to do whatever is in my personal capacity. And like I said, there's somebody working in the edtech space, right? I don't personally like the term Wapistani, but he is, right? I'll connect you over. So अगर आपसे कोई help हो सकती है उनके लिए तो that will be great. ठीक है फायजा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. इट वाज लवली स्पीकिंग टू यू. ऑल द बेस्ट. और अल्लाह करे अब चौथी मरतबा ना हो आपको कोविड, राइट? बेस्ट ऑफ लक. Thank you so much, Temuzab. Thank you so much. It was lovely talking to you, and thank you for the platform and all that you do. And definitely for Code Girls and Women in Tech PK, I'll reach out and see if we can take some of your time to श्योर. mentor a few आई women. Yeah. I'd be happy to. Thank you very much. Thank you for your Thank time. you. Allah Hafiz. Love is. Allah Hafiz.